Hello everyone, my dear students and respected parents. Hope you stay safe and fine. First of all, thank you so much watching me and my creation. Today, I'm going to show you a beautiful figurative drawing that is from oval. Okay, so from oval and round, we'll create a simple technique of figurative drawing. Okay, so I'm using here simple pencil like 2B, 3B, 4B and 6B too. Okay, and from yourself you can choose what number of pencil you can use. Most probably from starting you will draw by the number of 2B. Okay, so just use 2B pencil as starting. For your visibility, I want to draw by 4B or 6. Okay, so this is my simple papers. You can choose your own papers like A4, A3 size or normal A4 size paper. Okay, so let's start. Okay. So this is my first oval. Just simple oval like this. One more oval. Okay. One round. So now I want to create one human figure from those oval and one round. Okay, let's start. Just join इस तरह कुछ लाइन आप क्रिएट कीजिए और इसका हाफ और सिंपल सा लेना है. अभी इसमें आप फेस का जस्ट वन साइड मूवमेंट आपके पास ये हो गया आपका just to little setting above the round. Okay, so this is your simple figure. Okay, but remember one thing, this is your main body part and this one is your leg around. Okay, so again we'll start. One oval like this. One more oval. One more. One round. Okay, so easily you can draw one human figure sitting next to them. Okay. So अभी इसका इस तरह
ये पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये हाथ का ये फर्स्ट इतना दूर आएगा। नेक्स्ट कोई भी काम कर रहे हैं, whatever, maybe कुछ ऑब्जेक्ट, इसका पीछे में लेके जाता है इसको। ये हो गया। अब लिटिल बिट स्ट्रोक, ज़्यादा डिटेलिंग आपको करना नहीं है, क्योंकि दिस इज योर प्रैक्टिस ओनली। जब आप डिटेलिंग में इसका प्रोपोर्शन वाइज प्रैक्टिस करें तो बता रहा हो गया। तो ये आपको दो सिंपल सा फिगर, again oval from here, 1, 2, okay, 1 round, अब इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। ये हो गया। कुछ काम कर रहे हैं इस तरह। सो कितना इजी टेक्निक्स है। इस तरह आप शुरुआत में बेसिकली फ्रॉम व्हेन यू आर स्टार्टिंग पेंसिल ड्राइंग, फिगरेटिव ड्राइंग, तो उस टाइम पे आप इस तरह ज्योमेट्रिकल शेप से आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट आप इस तरह धीरे धीरे ज्योमेट्रिकल शेप से बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट
one oval, one more, another one. Okay, down. So now अभी यहाँ पे आपको फेस का ओवरऑल शेप देना है, बहुत डिटेल नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे इसका शेप में है, यू कैन से क्लियरली। ओके, तो ये चारों आपका सिंपल सा फिगर। अब एक स्मॉल फिगर इन दिस मिडिल, दिस इज also from oval, you can say very clearly one oval, one more, ओके। सो देखा आपने किस तरह बहुत ही आसान तरीका से ओनली यूजिंग दोस ओवल। ओके, इस तरह ओवल से बहुत अलग अलग शेप में फिगर क्रिएट किया। तो इसी हिसाब से आपको भी प्रैक्टिस करना है और ज़रूर आप भेजते रहिए, और आपका भी कुछ अलग मूवमेंट में और अलग कुछ फिगरेटिव स्केच या कुछ पार्ट ऑफ कंपोजिशन हो, पार्ट ऑफ फिगर हो, आपको कुछ सीखना है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स and lovely viewers, so thank you so much, but remember one thing, don't forget to subscribe our channel and tap the bell button to get the notification all around the live classes of my tips. Okay, so thank you so much.